Welcome back students to standard 10th maths chapter 8 introduction to trigonometry, and we are into 15th session. Okay, and since this is I think 4th session in succession, all right, where we are doing or solving prove that type of sums, right? Today we'll continue, and the next number is 32. If you remember the 31st sum that we did, I did it by two methods, all right? So today also this sum that we are going to do will be solved by two methods. See which one is more convenient for you. Choice is yours. Okay? If sine theta plus cos theta is equal to P and sec theta plus cosec theta is equal to Q, then show that left hand side is equal to right hand side. Q into P square minus 1 is equal to 2P. Children, be very careful. Alright? What you have? See, I have used colors nicely. P I have written in black. Q I have written in red. So we have the value of P and Q. And on left hand side, you have Q into bracket. And on right hand side, you have P. Correct? So what can we do? See children, I am going to build up this polynomial in two variable Q and P. धीरे धीरे मैं पूरा ये left hand side build up करने वाला हूँ. I am going to construct left hand side because I have P. So if you want to construct left hand side, first you will need P square. So I will square both sides. Then I don't want P square. आगे बढ़ो. P square minus 1. So subtracting 1 on both sides. So that will give me P square minus 1. And then multiplying both sides by Q. So that's how I'll be building my left hand side. And right hand side, whatever simplification we'll get, we'll call it result number 1. Okay. Then I'll build up the right hand side. P we already have. We want 2P. So multiplying 2 on both sides. Did you understand? So this is going to be method 1. Let's see children. Method 1. Alright. Sine theta plus cos theta is equal to P. And sec theta plus cosec theta is equal to Q. I'm going to call it 1 and this is given. Alright. Now here is P. First I will get P square. By 1 we have, well, left hand side is equal to right hand side. I'm going to use symmetry. P is equal to sine theta plus cos theta. Squaring both sides. Therefore, square of P is equal to sine theta plus cos theta whole square. So धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है. P square मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड वाला. ओके, राइट हैंड साइड क्या मिलता है? स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square, or x plus y whole square, that is x square plus y square plus 2xy. Okay, so this is sine square theta plus, कुछ children cos square theta, बस इतना ही लिख देते हैं, that middle term 2 into sine theta plus, 2 into sine theta into cos theta plus cos square theta. Therefore, P square is equal to this. Children, दो काम साथ में करते हैं. Subtracting 1 on both sides. Got it? Please. Alright? That is equal to sine square plus cos square is 1 plus 2 sine theta into cos theta. Correct? Minus 1. यहाँ reason लिखेंगे because cos square alpha plus sine square alpha is equal to 1.
All right, plus 1 minus 1 is gone. Therefore, p square minus 1 is this. Okay, so I got this two terms. I have to multiply q. Therefore, q into p square minus 1 is equal to q into 2 sine theta cos theta. Let me multiply q on right hand side. वो बाजू multiply करते हैं, ठीक है? Now I am going to put the value of q. q हमारे पास है, so that is equal to 2. यहाँ नहीं, don't substitute here because वो तो हमें चाहिए, ये left hand side चाहिए, q should be there, but we don't want q here. So 2 sine theta into cos theta into what is q? Sec theta plus cosec theta. ठीक है? That is equal to 2 sine theta into cos theta. Yes, convert into sine and cos. 1 upon cos theta plus 1 upon sine theta. यहां आपको मिलेगा LCM, which is cos theta into sine theta. Be careful, I am writing directly. यहां cos है, so sine is left. यहां sine है, so cos is left. Sine into 1 sine theta plus cos into 1 cos theta. ठीक है? और आगे क्या है? 2 sine theta into cos theta. Cos theta cancels, sine theta cancels. So what you got? Therefore, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया है. Q into p square minus 1 is equal to 2 times sine theta plus cos theta. Sine theta plus cos theta. I am going to call it result 2, or let me say this is result first. Roman figure. All right. So this left hand side q into p square minus 1, very nicely we build up that left hand side, and the value of that we got is 2 times sine theta plus cos theta. All right. Now right hand side build up करेंगे. What we want is 2p. P is already there by 1. By 1. It follows that. It follows that. What? P is equal to sine theta plus cos theta. ठीक है? हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, 2p चाहिए. So therefore, P into 2 is equal to sine theta plus cos theta multiplied by 2, i.e. 2p is equal to 2 आगे लिखते हैं, मोनोमियल है, सिंगल टर्म, और ये बाइनोमियल sin theta plus cos theta. उसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. This is result second. What is right hand side here? 2 sine plus cos. What is right hand side here? 2 sine plus cos. So by first and second, it follows that, बताइए, yes, q into p square minus 1 is equal to 2p. Proved. Wasn't that easy? Yes, it was. Correct? Alright. Now I'm going to show you another method. Alright? So let's see the alternative method then. So let's see. In this method, the simplification is going to be similar what we did in the first method, but only the technique is going to be different. Here we are a little bit more skillful, and if you remember in the 31st sum, the second method, where we substituted the value of whatever variable we had, here we have value of p and q, we can substitute that. Okay, chalo. So what is the skill that we are going to apply? आपको ये प्रूव करना है ना चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रूव दिस. तो आप एक काम करो, जितने भी p's और q's इक्वेशन में है, keep them on one side, and that is easy. Take p on other side, so that will be equal to 2. कोई भी वेरिएबल राइट हैंड साइड में मुझे नहीं चाहिए. So see what I do. q into p square minus 1, ये p नीचे गया, that is equal to 2. देखिए, you have to prove this, but you pick up this expression. ये expression लो, उसमें p और q की वैल्यू डाल दो and simplify करो. And what should be the simplified form? 2.
Then once you get this, take P on other side. This is proved. This is proved. Understood? Let's start. I'll straight away start with that expression. Now, okay, first that given sine theta, okay, alternative method. Alternative method. Alright. Sine theta plus cos theta is equal to P, and sec theta plus cosec theta is equal to Q. Result 1, and this is given. Correct? Okay. Now I'm picking up that expression. Now Q into P square minus 1 upon P is equal to. Yes, children. First I am putting the value of Q. What is Q? Sec theta plus cosec theta into, open the large bracket, P square. Now I am going to take P square. What is P? Sine theta plus cos theta. So P square will be sine theta plus cos theta whole square. Aage minus 1. So minus 1. And the brackets gets over. Correct? Whole upon. Again P. What is P? Sine theta plus cos theta. This equal to, I am writing it here. Now this is 1 upon cos plus 1 upon sine. Correct? Into expansion sine square theta plus 2 into sine theta plus cos theta plus cos square theta, or minus 1. Alright, expand हो गया. And this is sine theta plus cos theta. ये upon के लिए division use करना पड़ेगा. ये sine और cos LCM. यहाँ sine चाहिए, यहाँ cos चाहिए. So that is sine plus cos. Sine one's sine, cos one's cos. Okay, multiplied by. Okay, this sine square plus cos square is 1 plus 2 sine into cos minus 1 divide by. Okay, bracket में sine plus cos whole upon. I put division and that denominator is sine plus cos. I hope you have understood. Are you getting me? चलिए. This is, yeah, plus 1 minus 1 is gone. लेकिन ये plus 1 कहाँ से आया? Because sine square plus cos square is equal to 1. यहाँ use किया गया sine square plus cos square. So that is sine plus cos upon cos into sine into 2 times sine into cos multiplied by. So 1 upon sine plus cos. ये bracket रख दो, sine plus cos, cos, SCCS gone. That is equal to 2. i.e. Q into P square minus 1 upon P is equal to 2. This one is equal to 2. Therefore, Q into P square minus 1 is equal to 2P. Proved. हमने पहले से फिक्स किया था ये लाने के लिए, और उसके बाद फाइनल वर्क ये रहा. I hope you have understood. Got it? So ready for the next one? It is 33rd one. Yeah, similar to what we saw in 32nd sum. If tan theta plus sine theta is equal to A, the value of A is known, and tan theta minus sine theta equal to B. Here the simplification is going to be little bit easier, or it may be tougher. Let's see. Then prove that A square minus B square is equal to 4 times root AB. चलिए क्या करना है? We'll build up left hand side. Method 1. Left hand side A square. Okay, पहले ये लिख देते हैं. Tan theta plus sine theta is equal to A, and tan theta minus sine theta is equal to B. Call it 1, and this is given. Correct? So by 1 it follows that. By 1 it follows that. A square is equal to, बोलिए, tan theta plus sine theta whole square, and B square is equal to tan theta minus sine theta whole square, and combiningly you call it 2. मैंने A square पा लिया, मैंने B square पा लिया,
So now use Euclid's property, a square minus b square. So I'll write by 2, it follows that kya? Yes, left hand side a square minus left hand side b square is equal to right hand side tan theta plus sine theta whole square, not plus, minus tan theta minus sine theta whole square. चलिए, square of binomial minus square of binomial. Your left hand side you have achieved, so we are not going to disturb the left hand side at all. Now simplification करना है. A plus b whole square, so a square, that is tan square, plus 2ab, so 2 into tan theta into sine theta, plus b square, that is sine square theta, minus, children, minus, so I'll have to write expansion in bracket. First term square, tan square theta, minus 2 into tan theta into sine theta, alright, into sine theta, plus sine square theta. Open this bracket, that is tan square theta plus 2 tan theta into sine theta plus sine square theta, minus, signs will change, minus tan square theta plus 2 tan theta into sine theta and minus sine square theta. देखो children, plus tan square minus tan square minus sine square plus sine square, and these two are like terms, 2 tan theta sine theta plus 2 tan theta sine theta is 4 tan theta into sine theta. Therefore, a square minus b square is this. Result first. Okay. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन 4 times tan theta into sin theta. अब I am going to build up my right hand side, which is root. Now a और b तो already है ही, correct? So मैं by 1 it follows that क्या? a into b is equal to tan theta plus sin theta into tan theta minus sin theta. लेकिन मुझे तो स्क्वायर रूट चाहिए, so taking square root on both sides. Okay, square root of ab is equal to square root of ये a plus b और a minus b expand भी करते जाते हैं, so that is tan square theta minus sin square theta. I need 4 now, so multiplying 4 on both sides, 4ab is equal to 4 into square root of, इसका sin और cos में कन्वर्ट करते हैं, sin square theta upon cos square theta minus sin square theta upon 1. If you want, you can write. Children, if you want to make your work easier, see this in these two terms in the numerator sin square. So that is 4 into square root रहेगा, sin square is common, sin square theta is common, bracket में 1 upon cos square theta और minus 1. That is equal to 4 into children square है bracket से बाहर, so sin theta into 1 upon cos square is sec square theta और minus 1. That is equal to 4 into tan theta into square root of. याद करो children, because 1 plus tan square alpha is equal to sec square alpha. So sec square minus 1 is what? Tan square. So this is tan square theta, square root gone. So 4 into sin theta into tan theta. This is result second. And left hand side is 4 into root ab. So by first and second, it follows that a square minus b square is equal to, यहाँ क्या था? 4 root, I've written it here. Alright. By first and second, it follows that a square minus b square is equal to ये 4 into root ab. True. Understood? Now can we go for the second method? Ready for the next method? So this is going to be alternative method. Alternative method.
और मेथड 2 हम क्या करते हैं उसमें, I've got value of a and b, so I can substitute, but I want all a's and b's, those variables on one side. So हमें a square minus b square upon root ab is equal to 4. हमें ये एक्सप्रेशन पिकअप करना है and put the values of a and b and then simplify and show that is equal to 4. So the work is done there. Let's see. Yeah, first I'll write that tan theta plus sine theta is equal to A and tan theta minus sine theta is equal to B. This is result 1. ये alternative method ये अलग है. Alright, and that is given. Alright, now I'm picking up that expression a square minus b square upon root ab is equal to, चलिए what is A? tan theta plus sine theta और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर, बी इज दिस tan theta minus sine theta और स्क्वायर चाहिए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a into b. व्हाट इज a? tan theta plus sine theta into b. व्हाट इज b? tan theta minus sine theta. This is what I was talking about. अब जो सिंप्लीफिकेशन करना है जो पिछली मेथड में किया वही है, सेम. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज एक्सपांड करो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. ओके, आई विल डू हियर साइन चेंज करते जाऊंगा. tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया माइनस 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 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा विथ माइनस, लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और प्लस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, या दिस इज a प्लस b, a माइनस b. सो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, that is equal to 2 tan theta sin theta plus 2 tan theta sin theta, 4 tan theta into sin theta. All right, I'm going to write divide by, क्योंकि अब रेशनल नंबर फॉर्म में आने वाला है. डिवाइड बाय ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1. ये ब्रैकेट अलग ही रहेगा, राइट. डिवीजन साइन के बाद 2 tan थीटा इनटू sin थीटा डिवाइड बाय व्हाट इज एलसीएम cos स्क्वायर थीटा. सो यहां 1 और यहां cos स्क्वायर, सो दैट इज sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट बना रहेगा, करेक्ट. इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. दिस इज इक्वल टू 4 tan थीटा इनटू sin थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर कॉमन है, निकाल दो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. चलिए पहले से साइन कॉमन निकाल देते तो अच्छा रहता था, करेक्ट. यहां से साइन निकाल देते तो अच्छा रहता था. अब ये दूसरी तरीके से कर दिया. ऑलराइट, फाइन. दैट इज इक्वल टू 4 tan थीटा इंटू साइन, डिवाइड रहने दो और स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट में से क्या बाहर आया वो बोलो मुझे. साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. स्क्वायर रूट में क्या रह गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर, करेक्ट. दैट इज 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन, दिस इज tan थीटा. साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा और स्क्वायर रूट में से स्क्वायर गया, सो साइन थीटा. ओके, नाउ दिस इज 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 अपॉन हो गया, 1 अपॉन tan थीटा इंटू साइन थीटा. साइन थीटा कैंसिल, tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 4. व्हाट इज 4? ये पूरा एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट ab इज 4. Therefore, a square minus b square, रूट को वो बाजू ले जाओ, 4 इंटू रूट ab, प्रूव्ड.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन यहां मैंने साइन कॉमन नहीं निकाला तो देखो रास्ता थोड़ा लंबा हो गया, मेज से बाहर निकलने का रास्ता लंबा हो गया, कहीं हम अटके तो नहीं लेकिन पीछे आकर आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, गॉट इट? सो रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? I don't think we'll need two methods here. Only one method will complete our job. Okay? Let's see. So we have value of P. We have value of Q. And we have to show P square plus Q square is equal to this. So we will have to construct right hand side. और लेफ्ट हैंड साइड में वो P और Q है ही नहीं. ये A और B उधर नंबर था 4, 2. यहाँ ये रियल नंबर्स है A and B. They are unknown numbers. हाँ ये वेरिएबल्स है, ऑलराइट। सर ये वेरिएबल क्यों नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन लगता है ना? ओके चलो फिर भी सॉल्यूशन a प्लस कॉस थीटा सॉरी a इंटू कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू p एंड a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल टू q, रिजल्ट 1 एंड दिस इज गिवन। पहले पी स्क्वायर बिल्डअप करते हैं। बाय वन इट फॉलोज दैट आई एम राइटिंग दिस पी स्क्वायर, और शुड आई कीप इट ऑन राइट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड पे ही चाहिए। चलिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड by one it follows both results are from one only. A sin theta minus b cos theta whole square is equal to q square. Call it result 2. By 2 it follows that. बताइए sum of left hand side is equal to sum of right hand side. आपको p square plus q square चाहिए. So let's use Euclid's property for real numbers. Left hand side plus left hand side. A plus cos a into cos theta plus b sin theta whole square plus a sin theta minus b cos theta whole square is equal to what you want. आपको जो चाहिए वो p square plus q square. So आपका राइट हैंड साइड तो आपको मिल गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना है and you will be left with a square plus b square. You will get this directly. That's why we don't need another method here. चलिए बहुत लंबा एक्सपांशन होने वाला है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a cos थीटा इंटू b sin थीटा। a और b को साथ में रखते हैं a इंटू b एंड देन cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ दिस b स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका एक्सपांशन, एक्स्ट्रा ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ प्लस साइन। बोलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a square sin square theta minus है, so minus this into this 2 times a into b पहले लिखते हैं, then cos theta into sin theta या sin theta into cos theta जो भी लिखो no problem, और plus the last term b square cos square theta that is equal to, ये right hand side it has to be written as it is, all right। चलिए कुछ कैंसिल होता है luckily, प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा। अब क्या किया जाए चिल्ड्रन, व्हाट कैन वी डू? चिल्ड्रन एक काम करते हैं, a स्क्वायर वाली टर्म साथ में रखते हैं, therefore a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर वाली टर्म साथ में रखते हैं, सो प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो ये दो टर्म में फैक्टराइज करो, a स्क्वायर इज कॉमन ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस ओके sin स्क्वायर थीटा, और इसमें से b स्क्वायर कॉमन निकलता है, b स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अरे what is sin cos square plus sin square? 1. What is sin square plus cos square? 1. Therefore a square into 1 plus b square into 1
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रीजन लिखना पड़ेगा, क्या रीजन लिखोगे यहां, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा, यहां थीटा ही है, सो अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इंप्लाइज ये a square 1 जा a square, b square 1 जा b square is equal to p square plus q square. Proved, children. Got it? Clear to you? Sure? Good. So, okay, children, we have done number of prove that type of sums. We can conclude those type of sums now. You will have some sums which would be different when I give you the assignment. I'm sure most of you would be able to solve them. Good luck. Okay, now we are going to see three sums where we have to find the value. First, find sine theta and tan theta if cos theta is equal to b whole upon square root of a square plus b square, where theta is greater than 0, less than 90. Yeah, theta is an acute angle. Okay, children? So, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का सार, ये है गीता का ज्ञान. Are you scared? Don't be frightened. Alright, I'm talking about this sum. The value of cos theta. It is in terms of a and b. जो वैल्यू है cos थीटा की वो 3/4 या √3/2 या 1/2 ऐसी नोन वैल्यू नहीं है. इट इज अननोन एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ a and b. So of course sin theta or tan theta which you are going to get will be in the form of a and b and little bit complex. Okay, जैसे बीज बोओगे वैसे फल पाओगे. बीज में a और b है, फल में भी a और b रहेगा. That's what I am trying to say. So let's see. Okay. Children, what is given? Solution. Cos theta, the value is known. Cos theta is equal to b upon square root of a square plus b square. 1. And this is given. And you are supposed to find sin theta and tan theta. Children, recall the identity in which sine is there. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Cos square is known, या cos theta is known, we'll put the value. ठीक है, we know that. We know that. बोलिए, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 by trigonometric identity. Alright? Therefore, sin square theta plus, yes, whole square, किसका? b upon square root of a square plus b square is equal to 1. Therefore, sin square theta plus square of b, that is b square, and square root goes, so a square plus b square is equal to 1. Take this term on other side. इसको वो बाजू ले जाओ because you want to make sine subject of the formula. Sine is in the form of sine square, so let me write sine square theta is equal to 1 minus b square upon a square plus b square. Better represent this one also in fractional form. So now the LCM. LCM of 1 and a square plus b square is a square plus b square. So 1 into what? A square plus b square. Or a square plus b square into what? 1. So thus a square plus b square into 1 will be a square plus b square minus 1 into b square will be b square. Very simple now. This is gone. Therefore, sin theta is equal to, I'll write here. Therefore, sin square theta is equal to this. Sin square theta is equal to a square upon a square plus b square. So, taking square root on both sides. Therefore, sin theta is equal to square root of a square is a and this root will remain. Be careful, some children क्या लिख देते हैं? a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, वैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a प्लस b स्क्वायर का a प्लस लिखते हैं b स्क्वायर का. Absolutely wrong. Be careful. Okay? If it is a plus b whole square, तभी वो स्क्वायर रूट से निकल सकता है. Is that clear to you? Don't make that mistake.
चलिए एक तो अचीव कर लिया, साइन थीटा तो मिल गया। देखो जैसे इसमें ए और बी है ऐसे इसमें भी ए और बी है। नाउ यू हैव टू फाइंड tan, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक इंटररिलेशनशिप। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मिली है और कॉस थीटा की वैल्यू अवेलेबल है। चलिए दैट इज व्हाट इज साइन थीटा, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई पुट होल अपॉन की जगह पे डिवीजन साइन। cos थीटा दैट इज b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Convert division into multiplication, so inverse a square plus b square upon b. ये गया, so ultimately what is left? A in the numerator and b in the denominator. That is tan theta. So you got the value of tan theta also, and that is much simpler compared to the value of sin theta. Is that clear to you? Clear? Good. So let's see the second one. Find sec theta, tan theta and sin theta in terms of p. यहां तो बताया ही है कि you have to get that value in terms of p. Provided that sec theta plus tan theta is equal to p. Children, in the previous sum, the value of cos theta was given. Means value of one trigonometric ratio was given. Here, it is sum of two trigonometric ratios. So the situation is tough. It's difficult. What to do? इसकी मदद से कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ऑलराइट, यू नो आउट ऑफ 6 if you know the value of any one trigonometric ratios, you can find all remaining 5. But here the value of trigonometric ratio is not given. What is given? Sec theta plus tan theta is equal to p. This is given. अब इससे 6 में से कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ढूंढे तो कैसे? हमारे दिमाग में शायद ट्रांसफॉर्मिंग एवरीथिंग इनटू साइन और कॉस का आएगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म करके देख लीजिए, वो अनुभव काम लगेगा। काम तो नहीं करने वाला है, लेकिन लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। sec is what 1 upon cos plus tan is what cos sin upon cos, correct, is equal to p. So like denominator 1 plus sin theta upon cos theta is equal to p. So I'm getting the value of cos. I'm getting the value of cos. मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। cos theta is what 1 plus sin upon p, ऐसा कुछ। या what is sin theta? p cos theta minus 1. इससे भी काम बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा नहीं है। कैसे बनेगा? Therefore 1 plus sin theta is equal to p cos theta. Therefore sin theta is equal to p cos theta minus 1. Call it result number 2. अब trigonometric identity, we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1. The value of sin is there. लिखिए, therefore cos square theta plus, now instead of sin p cos, okay इसको भी cos लिख देता हूं, theta cos theta, p cos theta minus 1 whole square is equal to 1. अब देख लीजिए, here everywhere you are having cos, so you can get the value of cos. लेकिन ये it will lead you to quadratic equation. Quadratic equation मिलेगा, and solving quadratic equation is going to be very tough. देखा? So अब आगे तो बढ़ोगे, मेज में लगेगा ऐसा कि हम बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक होते रहोगे, वापस आना पड़ेगा। ऑलराइट, और बाहर निकलने तक आपका दम घुट जाएगा, मर तो नहीं जाओगे लेकिन आप थक जाओगे। ऑलराइट, चलिए, सो वी वोंट ट्रांसफॉर्म दिस इनटू साइन एंड कॉस। तो फिर करें क्या? इज देयर एनी हिंट? क्या कोई हिंट है चिल्ड्रन? a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे कोई फॉर्म हो दो टर्म वाले, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a माइनस बी करते, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a प्लस बी करते हैं, ताकि इसका एक्सपांशन तो हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट वी गेट शुड हेल्प अस टू प्रोसीड फर्दर। यहां होगा, देखो sec प्लस tan, इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड,
sec minus 10 आपको मिलने वाला है sec square minus 10 square, and then if you use identity sec square theta minus 10 square theta is equal to 1. मतलब हमारी प्रोसीजर आगे बढ़ती है. So let's do that. Therefore sec theta plus tan theta multiply and divide by is equal to p. What you are multiplying and dividing? Sec theta minus tan theta. Sec theta minus tan theta. Is that okay? Now numerator sec plus tan, sec minus tan. So that gives me sec square theta minus tan square theta whole upon sec theta minus tan theta. That is equal to p. Right hand side no change. Now this sec square minus tan square is 1 upon sec theta minus tan theta is equal to p. Because 1 plus tan square alpha is equal to sec square alpha. मैंने अल्फा लगा दिया यहां. देख लीजिए sec square minus tan square. Sec square minus tan square that is 1. ये children अभी भी नहीं मिला. आप इनवर्स करो. Sec theta minus tan theta upon 1. I'm not writing. ये p upon 1 becomes 1 upon p. Call it result number 2. इसको result 1 कह दो. यहां sec theta plus tan theta equal to p. और जो मिला वो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं. sec theta minus tan theta उसकी वैल्यू मिली. ओ गॉड, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. sec theta को x समझो, tan theta को y समझो. So x plus y is equal to p. X minus y is equal to 1 upon p. The best method to solve here will be elimination method. ठीक है, मैं लिखता हूं by 1 and 2. It follows that. क्या children? What it follows? लिख दो. sec theta plus tan theta is equal to p. और नीचे sec theta minus tan theta is equal to 1 upon p. बोलो plus 10 minus 10. This gives me sec plus sec 2 sec theta. और ये p plus 1 upon p आपको लिखना पड़ेगा. Alright? Therefore 2 sec theta is equal to p upon 1 plus 1 upon p. LCM निकालो. So p जा 1 जा 1 और p का LCM p square plus 1. Therefore sec theta ये 2 वहां ले चलो नीचे. Finished. So you got the value of sec theta. What is sec theta? P square plus 1 upon 2p. Got it? Alright. Now if you want you can eliminate sec and get tan. Or use the identity. 1 plus tan square is sec square. Sec की वैल्यू डाल दो and get tan. Alright? Okay? Now, yeah, sec से पालो cos. From sec you get cos. 1 upon reciprocal. और cos square plus sin square will give you sine. और cos और sin दोनों मिल गए फिर तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं. Are you getting me? So you have to complete this, children. Once again, if you want to use 1 plus tan square is equal to sec square, then put the value of sec and get tan. So ये sec की वैल्यू तो आपको मिली है. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये sec की वैल्यू यहां डाल दोगे तो आपको tan मिल जाएगा. Alright? इससे cos मिलेगा. फिर tan में cos की वैल्यू डालो. tan is sin upon cos. So you will get sine. So there are number of ways of doing it. But for me the best method would be इसको inverse कर दो. So that is cos. Cos square plus sin square equal to 1. That gives you sine. So you have targeted the two basic trigonometric ratios sine and cos. Having those two values, you can find any. Then you can take tan is equal to sine upon cos. Put the value of sine and cos and get it. Is that clear? Please complete it, children. I'm sure you will be able to do. Fine. Let's see the last sum of this session. It is number 3 and you have to find the value of cot A. Find cot A. If sin A plus cos A is equal to root 2 sine of 90 minus A. Children, the angle is 90 minus A. तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? A. 90 minus A का कॉम्प्लीमेंट्री A. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos.
Sine का complementary cos. So sine 90 minus a is cos a. Are you getting me, children? So पहले trigonometric ratios of complementary angle use कर लेते हैं. चलो, sin a plus cos a is equal to root 2 sine of 90 minus a. Given. Therefore, sin a, therefore, चालू रखिए ये because of equation, plus cos a, sin a plus cos a is equal to root 2. बोलो complementary of sine cos और complementary of 90 minus a. Alright, by trigonometric ratios of complementary angles. By trigonometric ratios of complementary angles. ये लंबा लिखना पड़ता है, उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं sin of 90 minus theta is equal to cos theta, because ये भी लिख सकते हैं या ये whatever you want. Alright, now children क्या करें, जैसे पिछले सम में sec plus tan is equal to कुछ दिया था, यहां sin plus cos, लेकिन observe nicely cos दो जगह पे है. On right hand side also there is a term containing cos. सगा संबंधी ने साथे भेगा करी दो यहाँ. Therefore, sin of a is equal to root 2 cos a. ये टर्म को ले चले. So cos a is on one side. Take cos a common, children. Common निकलता है तो root 2 minus 1 that is equal to sin a. ये तो बहुत जल्दी से हो गया children. Your target is cot. Cot is cos upon sin. So ये sin को नीचे ले चलो. Cos a अपॉन साइन ए, ये कॉट बन गया. इसको नीचे ले आओ राइट हैंड साइड पे, रूट 2 माइनस 1. साइन ए नीचे गया, सो ऑल्टरनेटो किया, साइन ए वहां और ब्रैकेट यहां लेफ्ट हैंड साइड पे. सो दिस इज योर कॉट ए. देयरफॉर अथवा आई ई, इसकी वैल्यू में लिखूं कॉट ए, कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, बिकॉज cot theta is equal to cos theta upon sin theta, or you may write by interrelationship. Children, denominator में root नहीं चाहिए. You should never have denominator, root in the denominator, or it is called surd. तो उसको rationalize करना पड़ेगा. a minus b फॉर्म है, so the rationalization factor is a plus b, root 2 minus 1, so root 2 plus 1, root 2 plus 1. That is equal to ऊपर तो रूट 2 प्लस 1 रहा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर और 1, that is equal to रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट गॉन और 1 स्क्वायर 1, and that is equal to रूट 2 प्लस 1 whole upon 1, i.e. cot a is equal to रूट 2 plus 1. This is the value of cot a. So understood, children? So we end up this session here. I hope it was good session for you. Let's wait for the next session. Till then, goodbye. Perhaps the last session is going to be the last one for this chapter. Okay? Where we are going to solve objective questions, especially MCQs. Alright. Let me remind you, children. Next Sunday you will have test of this chapter, chapter 8, Introduction to Trigonometry. The test will be of 30 marks. So prepare yourselves well. Okay? And soon you will get assignment of chapter 1, which I taught you, chapter 6 and chapter 8. You will get assignment of these 3 chapters as well. You can do it slowly, gradually, but you focus more on this chapter for the forthcoming test or upcoming test. Till then, goodbye.